Very good evening, everyone. I wish to welcome respected Chairman Sir Sri Praveen Garg, Secretary ISFCP, and Chairman TLF a Global School Moga, Engineer Janesh Garg, our beloved Director Sir Professor GD Gupta Sir, Principal ISF College of Pharmacy and Research Professor Dr. R.K. Narang Sir, Dean Student Welfare Professor G.S. Sharma Sir, Dean Examination Engineer Jaspreet Inder Sir, IQAC Head Dr. Siddharth Mehan, all HODs of different departments, faculty members of Department of Pharmaceutical Analysis and other departments of ISF College of Pharmacy, and dear alumni of the Department of Pharmaceutical Analysis from batch 2008 to 2003 at the Department Alumni Meet. I am very happy and feel proud to share that alumni of our department are spread throughout the world in different domains, including academics, research, industry, service sector, sales sector, administration in government and non-government organization. और मैं अपने एलुमिनाई के लिए एक बात कहना चाहता हूं। जब से 2008 से ये शुरू हुआ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। So I am also glad to share that we are having 125 alumni to Department of Pharmaceutical Analysis. So welcome you all to the online platform of ISF College of Pharmacy for our alumni meet. For further proceeding, I would like to welcome our director, sir, for his precious word. Welcome, sir. सर आप म्यूट हैं। Now okay. Yes sir, yes sir, yes sir. And slide is visible. Okay. So thank you very much. Sarve Bhavantu Shukna. प्रेजेंटेशन नहीं यार, अब आइए। सर्वे भवन्तु शुक्ना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी के सुखी समृद्ध एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम बहुत जो अभी 25 तारीख आने वाली है, सभी को मैरी क्रिसमस के इस पवन त्योहार पर आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, स्वस्थ रहें एवं सुखी रहें। नया वर्ष भी प्रारंभ होने वाले हैं, नूतन नव वर्ष की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं स्वागत करना चाहता हूं सभी एलुमनाई का जिन्होंने आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी की गरिमा, प्रतिभा एवं नाम को पूरे देश में रोशन किया है। हम सहृदय से उनका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहते हैं। So as you know that ISF College of Pharmacy was established late Sri Baldev Krishna Garg ji in 1984 as a diploma in pharmacy, and very fast growth of this institution. We have started B-Farm in 2000 under the leadership of Sri Praveen Garg ji, and presently this is the core team. Chairman of this ISF Educational Society, Sri Praveen Garg, Engineer Janesh Garg ji, Secretary of the ISF Educational Society and Chairman TLF Global School, myself here as a Director, and Dr. R.K. Narang ji, Principal of the ISF CPR. This is the assistant concern of the ISF Educational Society. मैं सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टीम्स डॉक्टर GS गंती जी, DSW इंजीनियर जसप्रीत इंदर सिंह जी, all are the HODs, Dr. Samsher Singh, Dr. Balak Das Kurmi ji, Dr. Manish Kumar, Dr. Sant Verma, Dr. Saurabh Kose, Dr. Bedpal, Dr. Khadagraj, Madam Karishma Agarwal, she is the
Head of the Department D Pharmacy, Dr. Siddharth Mayan, Coordinator of IQAC and MSME Business Incubation Center, Dr. Amandeep Singh Ji, Placement Officer, Dr. Sammi Jindal, Vice Principal and Head Department of ISF CPR, Dr. Abhay Pandey in charge ISF Analytical Lab. So all these are our head of the department and key person. They are working in the different areas of their core subject. So I welcome all of you. ISF College of Pharmacy, one of the renowned institute, as you know that, and this is the North India first institute running post graduation in the 9 branches and other program of the pharmacy. Recently in 2020-25, ISF College achieved 25th rank in the NRIF in pharmacy category in India. Consecutively, last 9 years, ISF College maintained their position in the NRIF and number of the other award recipient by the institution of the different professional body as well as the AICT, including the Utkarsh Sansthan Vishkarma Award. This is the certificate in 2020 during the lockdown. This is the only institute in North India received the third position by the Utkarsh Sansthan award given by the AICT. And during the COVID, we have also conducted one of the teaching marathon, 101 hours, and achieved the India Book of Record. At present, we have the well-established 41 labs, seminar room, classroom, tutorial room, and number of the other sophisticated labs. These are the 12. We have the very specialized lab, ISF Analytical Laboratory known as the SPAL, Animal Cell Culture, Microbial Cell Culture, Plant Tissue Culture, Novel Delivery Research Lab, Stability Analysis Lab, Molecular Pharmacology Lab, CAD, Industry Institute Partnership Cell, Clinical Research Facilities, Polymer Lab, and Zebrafish. So these are the 12 labs we are the running on a specialization of the model. Number of the other bodies these are running ethics and maintain the value of the professionals by the CCSEA, IEC, IEC, ADR, and IIPC, and number of the other professional body we have. They are maintaining the ethical values and the documentation process throughout the year. Not only this, our research team is doing the excellent work. So this is the latest update data of the research 24-25. The faculty member and student number of paper published 221 and total impact factor is 590. So this is the record of this institution. We have obtained the excellent impact factor, cumulative impact factor of all faculty and student. Not only this is the patent, 34 patent, design patent 10, copyright 10, books is the 15, and book chapter is the 28. So here is the impact factor, this is the 1 year, and patent, this is the last 5 year. Design patent, copyright, books, and all these things, these are the 2 year data. This is the one of the biggest achievement of our research team. So I congratulate to research team and all these members, including the student, faculty members, and excellent cooperation by the management. Recently in 2024, previously our student Sanjeevan Gupta achieved the second rank in GPAT. This is the also record of the ISF college, first time achieved the second rank in GPAT. So now the purpose of the alumni meet. So first of all, the strengthen the relationship between a college and its the former student. From long time we are the betting and we want to the develop one of the shell so that we can obtain the position and we can also include the our alumni so that we can come to know that how we can strengthen this the institutes. The purpose behind of this one, we have started first time of the online meet according to the branch by system. Strengthen of the quality education and research, student mentorship and career guidance. This is the another concept of the alumni so that we can grow very fast as well as the tune with the time, temperament, technology. Because I know that we are working in ISF College of Pharmacy at the Moga, and the source of the data through the only the soft media and some of the other sources. What you are doing the work in the field, show your suggestion, your guidance, always fruitful to our student. I request to always to you, all of you,
you can connect with the institution and provide your suggestion as well as the guidance. Industry connection and placement, yes, this is the one of the important part, because we know that our more than 5,000 of the student UGPG, they are the spread throughout the world, not only India, various state, but throughout the world they are available. So I request to all of you, you connect the ISF College of Pharmacy, and what types of the vacancy you have. I request you can put our alumni group, or direct you can send through the email, so that it will be the helpful to the juniors and the student, those who are the studying in UGPG and other program. Financial support to poor student, donation like instrument, old books and other awards. If you want to start with the memory of your parents, memory of the others, you can also donate something. It will be maintained decorum by the institution. Networking system and upliftment of the college activity, support for the institutional growth, for the industrial tour and visit. Number of time I have write down the application or request letter to the industry, but sometimes we are unable to obtain the proper replies. So at what capacity you are doing the work, you can help directly and indirectly for the industrial visit, or for the visit of your particular of the section, as well as the MOU with your industry. Continuous updating of the progress, strengthen of the moral values of the juniors. Number of times juniors feel that the position of the job is the very less in the field, but I know that ISF College of Pharmacy provide the quality education and research, and everywhere most probably the demand, so that you can improve the moral value of the juniors by the connecting with the heart and by the connecting with this group, so that you can provide the suggestion and your position and your achievement, what you have achieved after the completion of the graduation, post graduation, or PhD from this institution, so that the moral value of the junior, it will be the developed, or it will be the enhanced sense of the belongingness with the parent institution. Obviously it is our moral duty कि जिस संस्थान से हमने शिक्षा ली है, उस संस्थान को रिटर्न बैक में सिर्फ हम एक अच्छा सजेशन और एक सपोर्ट कैसे कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट के लिए. ऑलवेज आई फील दैट कि एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एलुमनाई. Anyway, connect with the contribution toward the college in the focused area of the technique, software, and guest lecture. Sometimes you have the excellent software, techniques, or you want to deliver a guest lecture, you're always welcome. You just send a simple message that you want to deliver a lecture for the student on a particular topic. Our team member, our faculty member connect to you and provide the opportunity to our students, so that they come to know what is going on inside of the industry, in the field, in the research, and so many other places where you are the working, including the, you can say, job role of the marketing. Now the very important point, promotion of the college and help for sponsorship during the ICS 2022. So dear all alumni, as you know that ISF College of Pharmacy organized number of the national and international workshop, and this is the opportunity given by the management to organize 22nd International Cyclodextrin Symposium. This is known as the ICS 22, and we are going to organize this ICS on the 22nd to 26th October of 2026. And this is the first time we are going to organize in the India, and 2021 ICS organized in the Italy, and 2020 this is the organized in the France. So this is the one of the biggest opportunity of the ISF College of Pharmacy to hold such types of the huge international cyclodextrin symposium. Your support, your cooperation, and you will involve directly or indirectly for the better, and we want to the grand success of this event. For this purpose, obviously, we know need of the support and sponsorship. At what capacity you are doing the work, you can contribute for this symposium. Not in the form of the monitoring, in the form of the various purpose. Let us consider if you are working in some of the industry people, they can be provide some of the sponsorship in the various format. And if there is the no any sponsorship, nothing, that's all, no problem. Your moral support, it will be the help to our
whole of the team to organize this activity. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज के दिन सिर्फ मैं आपको देखना और सुनना चाहता हूं, और इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य है ताकि यह संस्थान दिन रात जो चौगनी या हमारे यहाँ की फैकल्टी काम कर रही है उनकी मॉरल वैल्यू बढ़ सके और उनको पता लग सके व्हाट इज द रिटर्न इन दी मार्केट। मैं अपने भाषण में कहता रहता हूं कि अगर हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा अपने विद्यार्थियों की ग्रोथ पर बढ़ता है, लेकिन कई बार हमें इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि एक टीचर्स का एक सबसे बड़ा एक जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है उनका थ्रस्ट एरिया ऑफ देयर स्टूडेंट। जिस दिन उनका स्टूडेंट, जैसे कहा जाता है एक पिता उस समय बड़ा हो जाता है जब वह अपने पुत्र के नाम से जाना जाए, एक टीचर उस दिन बड़ा हो जाता है जब वो अपने विद्यार्थी के नाम से फील्ड में जाना जाए कि उस विद्यार्थी के आप शिक्षक हैं। उस दिन वो अपने आप को गर्वान्वित फील करता है और अपने आप को ये फील करता है कि उसने अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे सुदृढ़ता से, अपनी योग्यता से ऐसे योग्य शिक्षक बनाए हैं जिनके नाम से आज वो जाना जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऑर्गेनाइजेशन कमेटी डॉक्टर संत कुमार वर्मा जी और होल टीम को धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इस तरह का पंजाब में जो कहते हैं उपराला कीता, ये निस्संदेह रूप से सबके लिए वही सुखद होगा। एंड वी कैन कनेक्ट विद द हार्ट टू हार्ट एंड वी कैन डू द वर्क हैंड टू हैंड so that it will be helpful to the institution as well as the growth of the profession. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू सर। जैसा सर ने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ के लिए एक एल्यूमिनाई एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं आपका सपोर्ट, का कोऑपरेशन एज वेल एज सजेशन। बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग हमें ये लग रहा है कि आप गंती सर के वर्ड्स जरूर सुनना चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे एल्यूमिनाई की ये रिक्वेस्ट थी या ये कहें उनकी ख्वाहिश थी कि वो गंती सर से जरूर रूबरू हूं। तो मैं इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर रेस्पेक्टेड फैकल्टी जीएस शर्मा सर कि वो कुछ दो एक वर्ड्स बोलें अपने एल्यूमिनाई के लिए। वेलकम सर। Thank you, Dr. Sant Kumar Verma, for inviting me to say a few words regarding this. First of all, I would like to thank one and all the world students for joining this and make the event successful. And my sincere request of all the world students is only one thing, because now by the time you all are very in good positions, so budding pharmacist, M-Pharmacist, particularly analysis students, you have to take care of those people, and हमारा alumni placement incharge से cope up करके, if you have any vacancies and try to get the हमारा स्टूडेंट्स को अच्छा प्लेसमेंट करेगा तो we all are definitely happy. Thank you. I would like to hear all my students' voices now. Thank you all. Thank you, Sant Kumar ji. Thanks sir for your precious words. Now it's time to Words and blessings. Yes sir, obviously blessings तो सबसे हमारे सीनियर फैकल्टी हैं तो ब्लेसिंग्स तो हमें एवर टाइम चाहिए सर की, और हमें मिलती हैं और हमें चाहिए भी। तो थैंक यू सर फॉर योर ग्रेसियस प्रेजेंस। ये नेक्स्ट ये टाइम है हमारे एलुमनाई से इंटरेक्शन का। तो मैं चाहूंगा कि 2008 जो हमारा फर्स्ट बैच है, इससे हमारे साथ नितिन सर और करण सर हैं, और अगर कोई फैकल्टी और अवेलेबल है, कोई हमारा एलुमनाई अवेलेबल है, so they can interact. Welcome 2008 batch alumni. I would like to welcome Nitin sir. Hello, am I audible? Yes sir. Thank you for giving me the opportunity for joining this alumni meet 2026. As a parent institute for me, it
nourished me with respect to knowledge, with respect to my spirituality journey, as I participated in many spiritual activities also. So the emphasizing and transforming education into character through love, service, and ethics, urging graduates to be role models of society. The end of the knowledge is love. The end of the education is the character. So better to run towards the grade. It is to build the character. So I would like to give my message to my juniors that you are at the perfect stage of to learn, to grow, and to nourish, and to forward, and to also get failures in life also. Don't just attend classes, as well as don't just go to for practical, but develop more skills toward your analytical profile, so that we can engage with them, so that we can improve our skills and perseverance, guilt, as well as your leadership qualities. So these are my message to the juniors fellow, and my suggestion with respect to the institute is to build more and more institute throughout the country. Oh, thank you, sir. Thank you. Sir, Thank it you. is my request that kindly tell about current designation and affiliation. It will be helpful for our alumni also. Nowadays, I am working as associate professor at Jaipur National University, Jaipur. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Now, thank you, sir, for your presence and your valuable time. और आप होप सो हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे और जी जी हमारे एलुमनाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे. जी, मैं प्रवीण गर्ग जी को चरण वंदना और गंती सर को तो जरूर चरण वंदना करना चाहूंगा, क्योंकि वो तो मेरे एम फॉर्म के गाइड भी रह चुके हैं. So thank you, Ganti sir, for providing full knowledge with respect to analysis, and full support with love and joy and your knowledge. Thank you. Thank you, thank you. Karan sir with us. I would like to welcome Karan sir for his words. Good evening, everyone. Karan, I'm working as a VP R&D in Minimalist, which is a subsidiary of Unilever. It's an honor to be connecting with the institution that shaped who I am today. I began my journey here as a student of pharmaceutical analysis, spending countless hours in our analytical lab, ISFAL, especially a place that taught us discipline, precision, and a true respect for the science. This institution prepared me not just for the career, but for the rigor and confidence required for a PhD journey. Today, as I work alongside with the alumni of IITs and IIM in my company, the every department is either head by IITs or IIM. There, I am the only one, and I say with immense pride that I am from the ISF, which is one of the big achievement for me. In the end, I would like to thank the college for shaping my journey. Keep the same efforts going on. I would also like to thank Ganti sir and Sant Kumar ji for initiating this effort, connecting all the peoples. It's very good to connect all you old teachers, professors from where we learn, and it's like nostalgic to get back into those old memories. Thank you for this opportunity. Thanks. थैंक यू सर, थैंक यू सर. और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारे जो एलुमिनाई हैं, जो करंट पास आउट स्टूडेंट हैं, उनके लिए आप जरूर एक रास्ता निकालेंगे जहां से हमारे एलुमिनाई उस पाथ पे चल सके जो करंट हमारे स्टूडेंट पास आउट होंगे. Sure. We have done placements also from the ISF college in previously in 2021 and 2022, I think. 2 years we have done also the placements from the ISF. So it is my humble request that if we are able to organize. करण जी हर साल करिए. Yes, sir. We are doing that. This year we will also come. Sure, sir. Welcome. Thank you. The image of ISF is really good. So all the students that we hired from campus, those actually performed very well.
Thank you, sir. Thank you, sir, for your precious words and appreciation. Thank you, sir. Thank you, sir. Uh, Thank you, now it's Karan. time to. Kar- Thank you, Okay, sir. okay. Just one second. Thank you, Karan. Karan, Yes, my sir. sincere request to you is if you can make a MOU with the ISF, I'm so happy. That is my Sir, I will get in touch. Previously, I was get in touch with Mr. Vivek from your chemistry department for some oh, experiment sort of. I will get it connect again and will come back to you for that also. definitely okay. You Yes, just sure, sir. make it a that Yes, is that is what I require from you. sure, sir. Sure. Huh. Thank you, beta. Thank you. Thank you, sir. Oh, okay. Thank you, Karanji. Now it's time to move forward from 2009 batch. From 2009 batch, if any alumni is available from 2009 batch, and further 2010-11 batch. Yeah, it's open platform. Anyone, any from any batch who wish to share his thoughts can come and share his experience at ISFCP. Good evening, sir. Aarti this side. Good So evening, good currently, evening, very good evening. good evening, respected teachers, my juniors, my seniors, and my friends. Obviously, I'm Aarti from PCT Group of Institute. Currently working as assistant professor there. I'm here just to show my gratitude toward this institute. And obviously, this institute is a place where we're not studied. Also, we learned, we shaped our future, and also build our confidence here. And obviously, I just want to show my gratitude towards my teachers, obviously towards my guide also, Dr. Kamegar, because she believed in me when I doubted myself. And obviously, this institute is having a special place in my heart also. And as sir was saying that this institute has an image. When I am working as PCT in PCT as assistant professor, I am feeling same that कि ISF की बच्चों की अलग ही पहचान है. सब बड़े शॉक्ड होते हैं कि वाह आप ISF से हो. So it was a great experience for me, and it was a great journey with all of you guys. And just I want to say thanks to all of you, all my teachers, and obviously GD sir. Thanks for your guidance, sir, and thank you for welcoming us with so much warmth. Thank you. Thank you, Aarti. Aarti is our alumni of 2023 batch. So thank you, Aarti, for sparing your time. Uh, I would like to call any other alumni from previous batch, that is 2011 batch, Vivek Swankanji, Ankit Bansalji. Atul Agrawal sir is available. Yeah. Hello, Atul Agrawal this side. Yes, sir. Welcome, sir. Yeah. Welcome. How are you, sir? Very fine, Hello, sir. fine. Sir, I am Atul Agrawal. I'm from 2008 batch, or it was the first batch of our ISF. So great memories with us to develop a lab and many of the learnings from there. I'm working in Zydus Cadila right now. I'm manager QA here in Ahmedabad, and my so many of the knowledge I gained from the SWAL, it is very useful to me in right days. So I'm very happy to I'm happy to see you all here, and this and thank you to organize this type of alumni meet. Thank you, sir. Thank you, Atulji. I hope Atul your sir. जी जी. Atul sir, please. Director sir, please. Sir, you are in industry, so again, I would like to request that you can help our alumni in any kind of way, like in placement or other guidance also. और Yes, sir, sure. हमारे लिए कैंपस ओपन है, और जैसा आप छोड़ के गए थे उससे बहुत तेज ISF अभी चल रहा है. जिस गति से आप छोड़ के गए थे उससे बहुत तेज गति से चल रहा है. हम NIRF और
जो भी आप रैंकिंग देखेंगे इंडिया लेवल पे, सब पे हम स्टैंड कर रहे हैं। तो ये हमारे एलुमनाई और हमारे मैनेजमेंट और हमारे डायरेक्टर सर की मेहनत है कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं। सो थैंक यू अतुल सर। अतुल सर को स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने बोला था, सर ने कहा कि हाँ थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। तो थैंक यू सर, आपके प्रीसियस टाइम के लिए थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। भरत, भरत प्रीवियस एलुमनाई भरत शर्मा। Good evening to all. Welcome, Good evening. Bharat. Thank you, sir. Good evening, good evening. Good evening to our principal, sir, respected HOD, respected teachers, and my senior and juniors. Good evening to all. Sir, आप कैसे हो? ठीक हो सर सभी? हाँ, yes, yes, definitely. Sir, I would like to respectfully share that I have cleared the government post of pharmacy officer recently, but my joining is pending. I express my sincerely gratitude to the principal, HOD, and all the respected teachers of ISF College of Pharmacy Moga for their constant guidance, support, and encouragement through my academic journey. I am deeply thankful to my respected teachers and institute for their belief and support. I shall always strive to uphold the values of and reputation of ISF College of Pharmacy in my future responsibility and also in my professional career. Thanks to everyone for your guidance and blessings. Thank you, sir. Thank you. First of all, congratulations, Bharat, for Thank you. achieving success in your life Thank and you, sir. for Thank you your so much, job. sir. Thank you, sir, so much. Congratulations, Bharat. Thank you, sir. Thank you so much, sir. सर आपकी दुआओं से ये सब सभी God bless you. God bless आपकी ब्लेसिंग से ही हुआ है सर सभी कुछ। आप सबने So, सर अगर इतनी हिम्मत दी है। हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं तो आइए ऑब्वियसली हम आगे बढ़ते हैं। जैसा जी, सर जी। ने कहा कि किसी स्टूडेंट ने अगर नाम लिया है कहीं पे तो इसका मतलब है कि हम आगे ही जा रहे हैं। जी सो सर। थैंक यू सर फॉर भरत। 6 Yes. साल की जर्नी में सर आईएसएफ से बहुत कुछ सीखा है और आईएसएफ को बहुत आगे तक लेके जाएंगे सर, नाम ऊंचा करेंगे आईएसएफ का सर। भरत अभी कहाँ हो आप? सर करंटली तो एलएलआर में हूँ, लेकिन अभी पोस्टिंग पेंडिंग है सर। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लिया सर फार्मेसी ऑफिसर का। ओके ओके गुड। जी जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू भरत। तो Thank अभी you. आपको ऐसा लगता है आप कॉलेज में जी सर। टीचिंग नॉट करते ऑडिबल हैं सर, या आपकी आवाज कुछ नहीं आ रही सर। बच्चों को बताते हैं तो कुछ आईएसएफ का याद आता है आपको? बहुत सर, आपकी गाइडेंस जैसे आज सर आपने पढ़ाया ना, मैं वही रूल्स फॉलो करता हूँ बच्चों को सर पढ़ाने के लिए आगे। थोड़ी थोड़ी जो सीखा है सर आपसे वही कोशिश करता हूँ उसको एक्सप्रेस करने के लिए बच्चों को सर आगे। सर जैसे थोड़ी सी बिल्कुल डांट, थोड़ा बिल्कुल। सा प्यार, थोड़ा सा। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you भरत। हम भी Thank you. बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वेलकम सर, थैंक यू। From 2017 batch, Ajay Kumar sir and Rajat sir, if anyone available from 2017 batch, previous batch from next 2018 batch, Aditya, Mandeep, anyone from previous batch, 2019 batch, Joyson, Ankit, Preeti, Rajiv, anyone from previous batches, anyone, Mamita, Subham, anyone, Arshdeep is there. Yes, Arshdeep. Very good evening, everyone. Sir, first of all, thank you so much, Director, sir. I think I am the most luckiest person who is attending this alumni meet second time in a week. Thank you so much, San sir, for conducting this. Thank you so much, Vivek sir, and all the faculties and all the staffs. Currently, sir, I am working as an assistant professor in Lingyas Vidyapeeth, Faridabad, Haryana, Delhi, NCR. And sir, one thing I want to share, I actually shared this thing last day also. ISF is not only a college, it's a brand in itself.
Reason being, wherever we go, wherever we used to go, if we are saying we are the pass out of illumina of ISF College of Pharmacy, there is only one thing they used to say, यहाँ आपने research अच्छे से की होगी, यहाँ आपने research for sure आपने काम किया है. That's the value of ISF College of Pharmacy. And definitely sir, we'll try कि हम अपनी तरफ से ISF College को वी यूज टू आगे लेके जाएं ISF कॉलेज को. एंड कभी लेट डाउन ना होने दे हमारे स्टाफ को और हमारी फैकल्टीज को. थैंक यू अर्शदीप, आपने एक ब्रांड की तरह हमारे ISF को खड़ा किया. हमारे एलुमिनाई का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ऑब्वियसली हमारे मैनेजमेंट का. सो आप इसी तरह से ISF के नाम को आगे ले जाते रहे और ऑब्वियसली हमारी जो रिसर्च की क्वालिटी है और रिसर्च की क्वालिटी से ही ISF खड़ा हुआ है. तो थैंक यू. यस सर, थैंक यू थैंक यू सो मच सर फॉर लेटिंग मी इन. थैंक यू सो मच सर. From 2020 batch, if anyone available, Indu, Ram, Sukhvinder, Subham, yes, Subham. Subham, unmute yourself. Shubham, unmute yourself. Good evening, everyone. Good evening. So, sir, good evening to all my juniors, seniors, and all the mentors. Sir, currently I'm a PhD research scholar at Naipur Hajipur, final year research scholar. Sir, I can say that ISF CP played a crucial role in shaping my scientific thinking, discipline, and confidence to building this my career. I would like to thank my mentor, Dr. Vivekasati sir, and Dr. Balagdas sir, Pritipat ma'am, Kanti sir, San sir, and everyone who is there for me. Sir, I will also want to thank the organizer for arranging this alumni meet where we are we are like accepting where we are everyone. Our seniors are now one of our senior is at Minimalist, so it's very good. He's there. I will surely connect with him, and that's it, sir. Congratulations, first of all, Subham, for your postdoc. Thank you, sir. You have bagged the postdoc position Sweden. in Foreign Yes, sir. Institute, so it's pride to us also. Thank you, Yes, sir, Subham, for sir. sparing your valuable time. Yes, sir. From this batch, other Thank students, you, sir. Saptrisi, Thank you, everyone. Saptrisi, our alumni. Sukhvinder is there. Sukhvinder. Yes, Sukhvinder. Am I audible, sir? Yes, you are quite audible. Good evening, everyone. I am Sukhvinder Singh I am from Good evening. 2020-22 batch, and it's an immense pleasure for me to be here today in this alumni meet. During my time at ISF College of Pharmacy, I have fond memories of practical sessions in the laboratories, and I worked in the ISPAR lab also, working with the instruments like spectroscopies and the chromatographies. And I have also cherished the moments spent in the canteen with my friends, and we have enjoyed playing games also like volleyball and badminton. And for all these experiences, I just would like to acknowledge Dr. Judy Gupta, who was the director for the time being there. And also I would like to acknowledge Dr. Rohit Bhatia for his invaluable support and mentorship. And currently I'm working as a scientific assistant in the Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad, under the Ministry of Health and Family Welfare. And I'm truly happy to reconnect with all the alumni, and looking forward to reconnect and for the wonderful interactions ahead. Thank you, sir. Thank you, Sukhvinder. Thank you.
Other alumni, Sitansu is there. Sitansu. Good evening, sir. Good evening, good evening, good evening. I would like to thank all of my teachers, my guides during my infam, who they helped to teach a lot of things, several which will great for me to achieve more things in my future lives. And currently, I am an assistant professor of Bengal College of Pharmaceutical Technology in West Bengal. And one of the most achievement thing is in that alumni session, there is a student which is also my student. This is Sagnik Mukherjee. This is the student of alumni association team from ISF College, and he is also my student from my current college. And this is the achievement which I got from the ISF College of Pharmacy, from all my teachers and all the support of Dr. G.D. Gupta sir. Thank you, sir. So thank you, Sitansu. It's a pride for us कि हमारे एलुमिनाई के स्टूडेंट अब हमारे स्टूडेंट हैं, तो इट्स प्राइड फॉर ISFCP. Thank you, Sitansu. Saptrisi is there. Good evening, sir. Good evening, good evening. Switch on your video. You can switch on if possible. Yes, sir. Am I audible? Yes, 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 yes. Yes, sir. Good evening, everyone. Good evening, G.D. Gupta, sir. Good evening, all the faculties of ISF. I have pursued my MPharm from 2020 to 2022 batch, and currently working as assistant professor and pursuing PhD from BIT Mishra. My journey in ISF is very, I can say, like memorable. Like during the COVID time, we were there in the college and completing our project work. And we also learned a lot of things regarding the research paper publication thing. I can say probably that in many colleges, this research publication is not like in process, but in ISF, this is very good thing in habit to publish research papers, which is helpful in our current academic progression. Thank you, sir. Thank you, Saptrisi. Regarding emphasizing the research qualities of ISFCP. Thank you, Saptrisi. अगर किसी एलुमिनाई का कोई सजेशन भी है, तो he or she can deliver your suggestion, as management is also here. So we can try to implement your suggestion also. If any alumni has any suggestions at any step, you can deliver to us. Next alumni, Momita is there. Momita Sudarshan. Hello, sir. Hello, 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 Momita. Hello, sir. Hello. I'm Momita. I am from 2020 to 22 batch, and we Momita, were. if possible, switch on your video. Okay, I will try, but I'm in my room, so I don't think it will be a good video. Okay, okay. So, sir, we were the COVID batch 20 to 22, where we didn't know what was going to happen, what will happen in these circumstances. It was all like just unknown to us, and then we went for MPharm, and after that we now currently I am ICMR fellow at Manipal College of Pharmaceutical Sciences, and I am pursuing my PhD here. So I am in my third year, so hopefully I will finish soon. And I am very thankful for the master journey. I have learned so many things regarding research, publications. I'm very thankful to Vivek sir, who was my guide during my master's days.
My friends who were all like a second family to me. So many friends I have and so much good experiences. So yeah, thankful to all the things that that 2 years has given me. Thank you. Thank you, Momita. Thank you. Ankit is there. Ankit Kumar Singh, Somnath, Aniket. जी, good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, director, sir. Good evening, Azadi, sir. Good evening, Gandhi, sir. Good evening. And good evening, all the faculty members. I am Ankit Kumar Singh from the batch of 2022 to 24. Currently, I am working as assistant professor in JBIT College of Pharmacy. सर ये कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं इंटरव्यू के लिए जब भी जाते हैं ना और हम सिर्फ नाम लेते हैं कि हम ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हैं, तो वो इंटरव्यूअर भी ऐसे बोलते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है, आप तो वेल नोन हो हर चीज के लिए। तो सर ये ISF का तो नाम ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हर कोई अगर आपने कहीं भी ले दिया ना कि आप सिर्फ ISF से हो, तो उनको लगता है कि आपको सब आता है, आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है बताने की। और जो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सर, उसके लिए सर सन सर गाइड थे मेरे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। और डायरेक्टर सर की मोटिवेशनल स्पीच सर, वो तो सर उसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है जो सर ने कॉन्फ्रेंस हॉल में दिए हैं, कन्वोकेशंस में और मिनी ओडी में और क्लासरूम्स में, लैब्स में आके जो सर ने बताया है। और कई बार तो क्लासेस में आके जो सर वो छोटे छोटे वो क्वेश्चंस पूछ के जाते हैं ना ट्रिकी वाले, सर उसके लिए तो वो आज तक हमारे दिमाग में रहता है कि सर के क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं कहीं से भी। तो सर उसके लिए थैंक यू और बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। थैंक यू अंकित, थैंक यू। अंकित ऐसे जी, ही आपको लेकिन आपने जो है आपको कुछ अंकित अपने को गाइड को भी सिखाना चाहिए था, और आपने जिस तरह से पूछे रखी है अपने गाइड को कहिएगा ये भी कुछ करे। नहीं सर, सर को सब कुछ आता है वो। नहीं, आपके गाइड पे भी बहुत सूट करती है और इतने से कम सूट नहीं करेंगी उन्हें। सर वो सर ने कभी ट्राई नहीं की रखने की। नहीं सर, एक बार हो रहा है कि कई बार बोझ की वजह से आप तुमसे करेंगे वो प्रभावित होके करेंगे। जी नहीं सर, कई बार मूड का बहुत डिसएडवांटेजेस भी है। कई बार आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसके लिए रिजेक्शन फेल होता है सर उसके। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो, ये बिल्कुल भी नहीं सोचो, ये मन का भ्रम है। लोगों के पास अब मैं चाहूं कि बहुत अच्छे बाल और बहुत अच्छी मूछ तो हैं कहाँ, बहुत कम लोग बचे हैं। अभी थोड़ा सा नवनीत जी प्रकट हुए थे, ठीक है, तो ये चीज को बिल्कुल मत सोचो, ये अंदर का लगता है भाई। वहाँ उन्हें क्लीन शेप का क्या करना, उन्हें रिसर्चर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए। सो देयर इज द नो मीनिंग, ठीक है। यस सर, यस सर। अपने नेचुरल सिस्टम में रहिए और अपनी नॉलेज और अपने आप को टाइमली बिल्कुल ट्यून करते रहिए टेक्नोलॉजी से, सो इट विल बी द हेल्प टू यू। जी सर, थैंक यू सर। कितने साइंटिस्ट आपने देखे होंगे, तो उनके क्या है, बालों का बड़ा कनेक्शन होता है दिमाग से। जी सर। थैंक यू अंकित, थैंक यू। Now Shivam is with us. Shivam. Good evening. Good evening. Shivam is with us. Shivam Kumar. Yes, sir. Good evening, sir. Respected director, sir, HOD, sir, all faculty members, especially my guide Preeti ma'am. Good afternoon and good evening to everyone. It's a pleasure for me to interact with all of you, also with our seniors from 2008 batch and juniors. Currently, I am working as assistant professor at Gopal Narayan Singh University in Bihar. एंड बस इतना कहना चाहूँगा सर कि पहले मैं स्टूडेंट था, अभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि जो हम एज ए स्टूडेंट सीख रहे थे उसे आप लोगों ने कितने अच्छे तरह से हमें डिलीवर किया, जो हम अब उन्हें सिखा पा रहे हैं। और ISF का नाम
है सर, ये तो मैं कहूँगा कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो आईएसएफ बस मैं कहता हूँ कि आई एम पास आउट ऑफ आईएसएफ. They say, okay, then we have nothing want to ask you. Just whatever you did, we know you did at there. So yes, ISF have great name in academic fields, and also one thing I need to say that when I am studying there, one of my faculty say when you pass out from ISF, you will realize that what you get from here. And yes, today I am understanding that words, that what I got from there. So thank you to ISF, all the faculty members, आप my नाम भी ले guide. सकते हो, आप नाम भी ले सकते हो. ये सर मैं सर नेक्स्ट आपका ही नाम ले रहा था कि एचओडी सर, एंड स्पेशली माय गाइड प्रीति मैम, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था. सो थैंक यू मैम. एंड एसआरटी सर इज देयर आल्सो, गंती सर, and all my friends, those who helped during my project work. So I got two things from ISF: one good memory with my friends, and a great pocket of knowledge with all great faculties from there. Thank you, sir. Thank you, Shivam. Thank you. Thank you, Shivam, for nice words. Thank you. Aniket and Somnath is there. Aniket, welcome Aniket. अनिकेत जी आप अनम्यूट तो हैं लेकिन वॉइस को खोलिए, आवाज नहीं आ रही है. Very low pitch. Actually, signal problem in there. I try to find better. Now, am I audible? Yes. All of the faculty members, HOD, and director sir, and my guide Dr. K. Sharma sir. I'm Aniket Saini, currently working as a third assistant in Medical Center, situated in Gurugram. I'm very happy that I have passed from the ISF college in 2022-24. Then I joined the management. There are many people asking from where you are passed. Then I will say that I'm passed from ISF. Oh, that is a very good college in the field of MS. Really, and in other stage, I will say that the faculties, other colleges here, they are also known to ISF college. They will say that it is a great college. The jobs work there done in a great manner, and they have a good knowledge of review articles and research articles. I will feel happy during that when I hear that they at college. I'm feeling very happy that ISF made a great work. Thank you, Aniket. Thank you. Pankaj Khandelwal ji is with us. Pankaj ji. Yeah, hello, sir. Good evening, Ganti sir. Hello. If you are able to hear me. Good evening, sir. Good evening, sir. beta. Good evening. So nice. After a long time, I'm seeing you. So nice. Yeah. Okay, beta. Please Sure, continue. sir. Please continue. Yes, sir. Thank you for such a wonderful group, because I am really thinking about this, because it's a small lab, and
that the teachings that you give me, so that I can join my background. It's thank you for your teachings, and also I remember that Bhardwaj sir, they are my guide. I think they are not here now, but thanks for being. सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है. Am I audible now? Yes, sir. सर मैं अभी सन फार्मा गुड़गांव में एज ए रिसर्च मैनेजर जॉब कर रहा हूँ अभी. जी. एंड जितना भी मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है उसमें मुझे लगता है कि ISF कॉलेज की जो टीचिंग्स थे उसमें सबसे ज्यादा रोल रहा है, क्योंकि जो बेस जो आप लोगों ने मुझे बना के दिया Pankaj ji, you disconnected. Your voice is not audible. सर जैसा कि पंकज सर ने कहा कि पंकज सर इज करेंटली इज सन फार्मा, तो मेरी रिक्वेस्ट ये फिर से रहेगी कि आप हमारे जो करंट एलुमनाई हैं या तो आप कैंपस के लिए आए. कैंपस जो सन फार्मा का जो भी कैंपस है, अगर उनका कोई प्रोविजन है तो आप कैंपस के लिए आए, या आप हमारे जो करंट बैच के स्टूडेंट हैं उनको हम डायरेक्ट भेज सके, ऐसा कुछ प्रोसेस या कुछ डेवलप करें, या हमारे साथ MOU जो चीजें हो सके वो करें ताकि हम आगे अपने स्टूडेंट्स को आगे भेज सके. So next, Somnath is available here. Somnath. Good evening, sir. Good evening, director, sir. Good evening. Hello, sir. Good evening, sir. Currently, I'm working in Technical University of Bengal. Yes. Please switch Yes, on sir. your video. Hi, sir. Yes. Hi. Good evening, sir. Good evening, director, sir. Good evening, Kanti, sir. Currently, I'm working in Technical Assistant Professor at Technical University. Thank you, sir. Thank you, Ganti, sir, for teaching me, and also Pooja ma'am and Rohit, sir. All over you are so good, sir. And your knowledge are always helping me to teach our student. And my maximum student are right now is studying ISF College of Pharmacy in analytical department, pharmaceutics department, quality assurance department. So मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी सुदर्शन जी के भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं जिनको सुदर्शन जी ने टीच किया है. मतलब वो फिर से अपनी जो पुरानी जड़ें हैं वहां पर भेज रहे हैं बच्चों को कि आपको जो चीज मिलेगा, जो हम सीख के आए हैं वो वहीं से मिलेगा. तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है. अभी सुदर्शन जी के इन पढ़ाए हुए सोमनाथ जी के भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जिनने बी फॉर्म किया है इनके साथ. तो कई सारे बच्चे हैं जो अभी करंट एनालिसिस में हैं जिनने सोमनाथ जी के साथ बी फॉर्म किया है. सो थैंक यू. आपने जो वैल्यूज सीखी ISF में आप उनको आगे ले जा रहे हैं. थैंक यू सोमनाथ जी. थैंक यू. Thank you, Ganti, sir. आप ऐसे ही जुड़े रहे ISF के साथ. ये हमारी उम्मीद है और ये हमारी इच्छा भी है. थैंक यू. अभी हमारे साथ सुदर्शन अवेलेबल हैं. सुदर्शन जी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. स्विच ऑन योर वीडियो सुदर्शन जी. गुड इवनिंग सर.
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Good evening, Sudarshan. Good evening. आपकी वीडियो नहीं आ रही है। Thanks for यस सुदर्शन जी प्लीज बोलिए। आपकी वीडियो नहीं आ रही, बोलिए बोलिए। Thank you, sir, for providing me the opportunity. I want to thanks especially my guide Vivek Asati sir and my HOD Dr. Sant Kumar Verma for providing me the lots of knowledge during my ISF journey, especially in the second year of master's program. I have learned a lot of things about the research paper publication, review paper, and I all especially want to thank the whole ISF team for providing us such a great laboratory facility, which helps us learning a lot of analytical technique like HPLC, UB, and IR, and double S, and all other techniques also. Because सर मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ शेखावटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीकर में। तो ये चीज मैंने देखी है कि ये जो लेबोरेटरी फैसिलिटीज है वो आईएसएफ के अलावा बहुत शायद ही किसी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसके पास अवेलेबल होंगी मेरे अकॉर्डिंग। और स्पेशली गंती सर को थैंक्स सर, क्योंकि उन्होंने हमें जो फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल सिखाए वो अभी बहुत काम आ रहे हैं। स्पेशली मैं 7th सेम को इंस्ट्रूमेंटल पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सुदर्शन जी, थैंक यू। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे एक प्रीवियस एलुमनाई यूनिस जी हमारे साथ हैं। यूनिस। Yes, sir. Very good evening. And I would like to thank everyone in ISF, including director, sir, teachers, especially Rohit Bhatia, sir. I am currently working as teacher in Chandigarh University and in the phase of submission of my PhD. And I am from Yemen, basically, and I am from the batch 2019. The best thing about ISF is the research environment, the research mentality. We are great to ISF for just igniting the research, the publication, the environment. It was really a great journey, and I would like also to thank Ganti sir, who was my teacher, and every teacher here. I guess most of them, they left, but we always have love and appreciation for this college, always recommending this college for like anyone who wants to do MPharm. Thank you so much. थैंक यू यूनिस जी, थैंक यू। आप यमन से हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप आईएसएफ का नाम वहां तक ले जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू। Anyone available at this platform who wish to speak can speak. So I think all the available alumni have expressed their views. Now it's time to faculty. So if any faculty, KCG, if you wish to speak anything, you are most welcome. So अभी तो सबका हो गया है। सारे एलुमनाई ने काफी अच्छा सजेशन दिए, काफी अच्छे प्लेस पे हैं। सो अनिकेत का आवाज ब्रेक हो रहा था, तो अनिकेत सैनी इज इट इन मैनकाइंड रिसर्च सेंटर। एक्चुअली वो बताना चाह रहा था, उसकी वॉइस ब्रेक हो रहा था। तो काफी अच्छे प्लेस पे हैं, इंडस्ट्री में एंट्री है, तो इनके थ्रू काफी लोगों से कनेक्ट करने के लिए भी मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा एलुमनाई नेक्स्ट टाइम ज्वाइन हो, इस पे थोड़ा सा और फोकस करना है। हाँ जी सर, थैंक यू फॉर योर सजेशन। और जैसे कि हमारे एलुमनाई डिफरेंट जगह है, तो आगे जरूर बढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों को, जो करंट स्टूडेंट्स हैं।
Vivek sir, if you wish to say something. Yes, Dr. San, thank you. I think ISF College provide a lot of things to every people, not only to students, teachers also, because we learn so many things when we guide to the students also. And I think one of the most important thing that I like in this institute, that there is no difference between weak student and the intelligent student, because every student just tackle in a similar way. They have to perform their study. They present J Club, and they write the review article. They have a project, so they need to complete and to present in their final semester. So all these things really learn so many things to each student and teacher also. So that's all about. आप कुछ गाना चाह रहे थे शायद. हाँ, बस एक छोटा सा गाना मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था. ISF की गलियां वेरी वेरी स्मार्ट, हाय मेरी तौबा तौबा. ISF की लैब्स वेरी वेरी स्मार्ट, हाय मेरी तौबा तौबा. हेड को भी रिपीट करवाओ. जी सर, हेड भी रिपीट करेंगे साथ साथ में. बोलिए संत जी. ISF की गलियां वेरी वेरी स्मार्ट, हाय मेरी तौबा तौबा. ऑब्वियस है सर. और थैंक यू विवेक सर आपके इस अंदाज के लिए. थैंक यू. आप जिसके लिए जाने जाते हैं. थैंक यू. थैंक यू. नेक्स्ट प्रीति मैम, काम्या मैम, गुरप्रीत जी is with us. Yes, sir, I am with you. Yes, Oh, sir. yes, sir, already. अभी बच्चे सही जगह placed हैं, they are growing well, they are doing well. ये एक हमारी ISF की सबसे बड़ी अचीवमेंट है. काफी पुराने एलुमनाई कनेक्ट हुए, कई जिनसे मैं पढ़ा भी हूँ, लाइक करण एंड नितिन सर. उन्होंने कभी हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सिखाया था 2010-11 में. आज उनको देख के अच्छा लगा. was great meeting them. Thank you, sir. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. म्यूटेड है. थैंक यू. आप हमारे एलुमनाई भी हैं. जी जी सर. थैंक यू सर. काम्या मैम, प्रीति मैम इज विथ अस. प्रीति मैम, यस. जी सर. Good evening to all of you. Welcome ma'am, welcome. Welcome. जी sir. So first of all, I am thankful to all alumni and all my students for gathering on this platform. And मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि please stay connected with our students, with the institute, because आप सभी लोग एक रूट की तरह हैं हमारे लिए. और obvious है कि जब तक रूट हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक हमारे बच्चे आगे नहीं जा पाएंगे. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अवर स्टूडेंट्स और उन्हें रास्ते दिखाते रहिए आप सभी लोग, और हम सभी से कनेक्टेड रहिए. सो थैंक यू ऑल. थैंक यू मैम, थैंक यू. एक रिक्वेस्ट है सर, बच्चों के मैसेज मुझे पर्सनली आ रहे हैं डायरेक्टर सर के लिए कि सर की 2 लाइनों के बगैर तो ये एलुमनाई मीट कंप्लीट नहीं होगी. तो सर ये स्पेशली मेरे पास अभी मोबाइल है और बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि एटलीस्ट डायरेक्टर सर की जब तक 2 लाइनें नहीं होंगी तब तक एलुमनाई मीट पूरी कंप्लीट नहीं होगी. तो सर प्लीज. यस सर. देखिए मैं 2 लाइनें कहता हूं. नजर ने नजर को नजर से देखा. आज का जो वाकया है, नजर ने नजर को नजर से देखा, नजर को नजर ना लगे ऐसे आज मैंने नजरिए से देखा. नजर को नजर ना लगे ऐसे मैंने नजरिए से देखा. तो जो भी हमारे छात्र हैं वो तरक्की करें और इनको किसी की नजर ना लगे. और जहां तक आपने जो कहा कि इंस्टीट्यूट की ग्रोथ के लिए और इंस्टीट्यूट जो आपको सिखाता है, निसंदेह रूप से
यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का पूरा स्टाफ डेडिकेशन से काम करता है। हमारा तो यदा कदा ही आपसे मौका पड़ता है, लेकिन जो आप लोग लैब में सीखते हैं, क्लासरूम में सीखते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करें। एंड देयर इज द नो शॉर्टकट, ओनली इज द रिक्वायर्ड कि आप अपने जीवन में जब एक सही, और जो आज मैंने कभी ये सीखा है या पढ़ा है कहीं, या मैं अपने जीवन में धारण करता हूँ कि अगर कोई सबसे बड़ा अस्त्र है तो वो है विनम्रता। आप अपने जीवन में विनम्र रहिए, और विनम्र रह करके आप जिस दिन योग्यता को प्राप्त करेंगे उस दिन आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। तो जितना आपने सीखा है बहुत अच्छा है। विनम्र भाव से अपने जीवन में आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। माना कि चारों तरफ अंधेरा है, कम से कम एक दीपक तो जलाइए, दूसरों का ना सही अपने जीवन में थोड़ी रोशनी तो लाइए। आज नया वर्ष आ रहा है, तो नए वर्ष के मायने कभी भी ये नहीं होते हैं कि आप सड़कों पर उतर जाएं। इसके लिए मैं आपको अंतिम लाइनें कहता हूं, लौट आओ उस रास्ते से जो आगे नहीं जाता, लौट आओ उस रास्ते से जो आगे नहीं जाता, जो सभ्याचार से अपोजिट हो वो सारे रास्ते, चाहे अत्याचार हो, भ्रष्टाचार हो, दुराचार हो, जितनी भी चीजें हैं, लौट आओ उस रास्ते से जो आगे नहीं जाता। दूसरों का ना सही अपने जीवन में थोड़ी रोशनी तो लाइए। ईश्वर के द्वारा दी हुई इस अनुपम रचना को हर रोज क्यों सता रहे हो? एडवांस के नाम पर जो आज व्यभिचार हो रहा है उसके लिए कह रहा हूं। ईश्वर के द्वारा दी हुई इस अनुपम रचना को हर रोज क्यों सता रहे हो? और मेरे युवाओं, अपने ही जीवन में जहर के इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। Thank you, sir. Thank you, sir. Interdepartmental faculty, Dr. Balas Das ji also available. If sir wish to say something, sir is welcome. Thank you, sir. Good evening to respected director, sir. उनके पास तो बहुत पुराना मसाला है, उसको सुनाएंगे आज। Good evening to respected director, sir, Good all evening, the sir. Good faculty evening, good members and alumni. Some alumni are also very senior, so we didn't know very well. But after 2021 analysis, students are very close to me with the application of analytical quality wide design in his research paper. And हम कह सकते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पड़ोसी हैं, तो सबसे ज्यादा मेरा रिलेशन रहा है एनालिसिस के स्टूडेंट से। दैट्स व्हाई आज मैं सभी से मिलना चाह रहा था। बालक जी, पड़ोस की बात ना करो, नहीं, हमारे बाजू में है सर। पड़ोस तो छोड़ ही दो, फिर बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। एनालिसिस लैब और हमारी लैब आजू बाजू है, और मेरा चैम्बर भी वहीं था, तो कई बच्चों से मैं काफी क्लोज रहा एनालिसिस के बच्चों से। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस मीटिंग। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप का अस्तित्व तो आपके इंस्टीट्यूट से है। जहाँ भी आप जाएंगे इस इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली आपकी पहचान इस इंस्टीट्यूट से होगी। से हम बोलते हैं पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। और आपका अगर आप जुड़े रहेंगे इंस्टीट्यूट से, तो इंस्टीट्यूट भी आपके साथ ग्रो करेगा, और डेफिनेटली यू विल बी ग्रो विद द इंस्टीट्यूट। सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एक आध दो पंक्ति भी कहिए आप, जो आपने केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स के बीच की जो दीवार है उसको हटा दीजिए, अब पंक्ति कहिए एनालिसिस की। ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। ओवर टू यू डॉक्टर संत कुमार वर्मा सर। थैंक यू पंक्ति तो सुनाइए सर। ऐसे कैसे? क्या? दो पंक्तियां तो सुनाइए सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि जो भी करो शिद्दत से करो, और नफरत भी करो तो मोहब्बत से करो। थैंक यू। ओके ओके सर। Thank you, sir. Thank you for your words. It's time to pay thanks to everyone. Before proceeding for
final session, I would like to request, we are having ICS 22 with us in the year 2026. It is a mega event, 5-day event from 20 to 22nd to 26th of October. It is pure international event, and we are expecting 15 to 20 country scientist researcher with us. So we kindly request to you, all of you, प्लीज ज्वाइन. जैसे हमारे जो एलुमिनाई हैं वो अपने स्टूडेंट के साथ आए और फिर से ISF के साथ जुड़े, जो हम जिनके अभी स्टूडेंट्स हैं करंट, तो they are most welcome to ISF CP again in the next year 2026. So thank you management of ISF College of Pharmacy for providing opportunity to organize this alumni meet. I am also thankful to our respected director sir, principal ISF CPR Dr. R.K. Narang sir, Dean Student Welfare Dr. G.S. Sharma sir, Dean Examination Jaspreet Inder sir, all HODs, all faculty members of Department of Pharmaceutical Analysis and other departments for sparing their valuable time and conducting this alumni meet. Thank you everyone to spare your valuable time. Thank you for being with us. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you all. Thank you. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you. Thank you. Good night. Good Good night. night. Thank Good you night. very much. Thank you, sir. Good night, sir. Good night.